एक बार हम brief में कर लेते हैं. We have done this in the offline class. So does anyone tell me the meaning of segmentation? Can anyone tell me the meaning of segmentation? That how we divide the market into different categories. Yes, so segmentation is nothing but segmentation is basically there is a huge market, there is a huge consumer set. So it is like if I talk about the present time, so there is something like अगर हमारे को market को segment करना है, एक product, one market strategy, one product does not fit all. So can you think of any product right now, if I talk in today's times, if I talk of today's in today's arena, can you think of any one product which is similar for everyone? Can you think of any product? Like the target audience is the same. There मैम is no फूड difference. The एसेंशियल्स. marketing, food essentials तो बच्चे बहुत बड़ी category है, वो कैसे similar होता है? Can you specify a company's name or a product name? From this like wheat, rice, the brands of rice, I think it's pretty much for every market. Cars. Cars में तो बच्चे बहुत segmentation है. You have different kinds of cars or differently. There are sports cars, there are SUVs, there Okay, are ma'am. sedans. For the premium Ma'am, segment, the buyer no, ma'am, in cars we have a different segment. Like premium customer so I will am buy here the talking premium. about mass marketing. I am not talking about segmentation. Please hear my question. मैं पूछ रही हूँ कोई ऐसा product. If I talk in today's time, yes, in the past, in marketing the is not earlier arena. available at the moment. Hmm. Mass marketing is not happening at this moment. Yeah, it is. Toothpaste. It is. Toothpaste में भी बच्चे there is a lot of Have segmentation. You have different different. ठीक है, different toothpaste for different purposes, like for caries, for cavities, you have different kinds of toothpaste. Sensodyne has sensitivity के लिए, so different kind. So basically mass marketing की अगर हम what are you saying? बच्चे बोलो. Fabricol can be it can be an example like the stick marketing अलग है. People are known for Fabricol. They are search for Fabricol. So if I talk of Fevicol also, yes, product wise, yes, but if I talk of their packaging, the packaging of Fevicol is different. There are big boxes, there are small boxes. So again, different segments for different kind of. Ma'am, like Fabric, another segment of that product, similar to Come up again. Fabric and lotions, liquid. Again, there is a lot of segmentation in these lotions and all these things. Petrol. Aeroplanes. Petrol. Like that, because two companies are taking care of Airbus and Boeing. But again, there are segmentation, there are different types. So we Petrol can don't either have think so that segmentation. there is any product without segmentation. That is the question, that is there any product which does not have segmentation in today's market? I think there is no product without segmentation. Very few, very few. अगर हम बात करें तो almost अभी हम nil की तरफ जा रहे हैं. Every product has certain kind of segmentation. So just broadly moving. So again, segmentation, targeting and positioning. What does it mean? One by one, we are going to do the three concepts in detail. Last class में हमने segmentation किया था. तो मैं इसका recap देके आगे चलूंगी positioning पे. Segmentation, targeting we have already done. So segmentation is we have to identify from a very big audience. We have to identify and then I profile distinct set of buyers जिनकी नीड्स सिमिलर हैं, जिनकी प्रेफरेंसेस सिमिलर हैं. ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं सेगमेंटेशन. When a company starts to market the product, when a company starts to create the marketing strategy for a product, so first they find out the
टारगेट ऑडियंस, एग्जैक्ट सेगमेंट की जिनको अपना जहाँ पे प्रोडक्ट को बेचना है। तो उस स्टेप को जहाँ पे हम सिमिलर लोगों को, जिनकी सिमिलर प्रेफरेंसेस हैं, जिनकी सिमिलर नीड्स हैं, उनको ग्रुप करते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेगमेंटेशन, राइट? नाउ व्हेनेवर अ कंपनी इज डिसाइडिंग और ट्राइंग टू फाइंड आउट अ सेगमेंट, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी सिर्फ एक सेगमेंट फाइंड आउट करती है। The company can go in for more than one segment also, right? तो उस केस में हम जब उन सेगमेंट्स में से एक या दो सेगमेंट को सिलेक्ट करते हैं, in which the company exactly wants to enter, is known as your market targeting. And again, the third step is positioning, which we are going to study in detail today. Positioning is for that particular segment जो हमने shortlist किया है, उसके लिए हम एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, एक एडवर्ट बना रहे हैं, जिससे हम कंपनी की जो यूएसपी है, जो इसके डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं कि विज़ कॉम्पिटिटर्स हमें ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना है, ये ऑफरिंग क्यों देनी है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट इज पोजिशनिंग। ठीक है? एनी डाउट टिल नाउ एनीवन? No, ठीक ma'am. है, आगे चलते हैं। फाइन मैम। अब now the next is what are the levels and patterns of market segmentation. तो सबसे पहला हुआ mass market, one product fits all. Then we come to the segment marketing. Segment marketing में क्या करते हैं? We try to find out, we try to identify groups of population or the consumers which have the similar patterns, which have the similar features. ठीक है, वो हो गई आपकी segment market. देन आती है आपकी नीश मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग में क्या होता है? विद इन द सेगमेंट अगर कोई हमारा स्पेशलाइज्ड और सेगमेंट हो जाता है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ shampoo which is treating dandruff, so anti dandruff is one segment, but उस anti dandruff में भी if there is a sub segment or a narrower segment which is treating a particular kind of dandruff caused by a particular kind of bacteria, then that is what? That is a niche market. segment के अंदर भी segment अगर हम कर देते हैं जो कि बहुत specialized होता है, उसको हम बोलते हैं niche marketing. फिर होती है लोकल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग इज अगेन इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी और द डेमोग्राफी, कि बिल्कुल ही हम लोकल लेवल पे जाके बेस्ड ऑन द ज्योग्राफी, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द रीजन देयर इज लाइक अ स्पेशल काइंड ऑफ टी इन कश्मीर कॉल्ड कहवा, वो बना रहे हैं, that is local marketing. And then we come on down to the individual customer marketing. Now what does individual customer marketing mean? कि we are targeting the product, we are trying to understand the very individualized needs of the consumer, so that is individual customer marketing. तो ये आपके क्या हो जाते हैं? ये आपके different segments, different levels हो जाते हैं, patterns of segmentation जहाँ पे product को market किया जाता है। Any doubt till now anyone has? No, ma'am. ठीक है, shall I move नो ahead? मैम। यस मैम। Sure, ma'am. ठीक है, हेलो मैम। देन कम्स द सेगमेंटेशन प्रोसेस, कि जब हम एक्चुअली में सेगमेंटेशन करने चाहते हैं, सो हाउ डू वी गो अबाउट डूइंग द सेगमेंटेशन? सो फर्स्ट स्टेप इज द नीड बेस्ड सेगमेंटेशन। सो सबसे पहले हम कस्टमर्स को ग्रुप करते हैं बेस्ड ऑन देयर सिमिलर नीड्स and what are the benefits that the customers are trying to get from a particular product or service, or what problem of a customer is a particular product or service solving. तो जो similar groups हैं उनको हम एक साथ segment करने की कोशिश करते हैं। Now next is the segment identification. So for each segment हम different demographics, उनका lifestyle क्या है, उनका usage behavior क्या है, हम उस पे उसको और ज्यादा डिवाइड कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सेगमेंट कितना अट्रैक्टिव है। हमने सेगमेंट तो बना दिया, बट हाउ अट्रैक्टिव इज माय सेगमेंट? सो हेयर इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिवनेस क्या होता है? मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उसका मार्केट ग्रोथ कितना है, कितना कंपटीशन है, कितना मार्केट एक्सेस है।
So we try to gauge out the overall attractiveness of each segment. After we have done that, हम market की segment की profitability को define करते हैं कि कितना profitable है वो segment. Then for that particular segment जो कि हमने finally decide किया है, उसके लिए we try to create a value proposition or a market for that particular segment. So this is the process of segmentation. Now again जो हमने segment choose किया है वो segment effective कैसे हो सकता है? We have to find out कि whatever segments I have defined or whatever segments I have decided, they are also effective. So what are the certain criteria to make my segment effective? So first is my segment has to be measurable. Measurable का क्या मतलब है? So I am able to measure it. It is measurable. It is not just something which is मतलब बिल्कुल हवा में है और हम सिर्फ उसकी कोई बात ही नहीं कर रहे. It has to be measurable. Then second is it has to be substantial. Substantial का मतलब है कि कुछ उसमें there has to be a certain amount of people, certain amount of consumers. It should not be nothing जो just हवा में है. Then accessible, obviously जो भी आप segment choose कर रहे हो उस तक आप पहुंचने चाहिए हो, ठीक है, हवा में नहीं होना चाहिए वो segment. Then differentiable, जो भी आप segment बना रहे हो वो एक दूसरे से differentiate करते हुए होने चाहिए. Now what do I mean by differentiable here? What is differentiation? Clarity or rather similarity. Comparison. Comparison between whom? Between two products. different product. Very good. Different products, different segments. तो जो Characteristics भी अलग हो सकती है. हाँ करेक्टरिस्टिक्स अलग हो सकते हैं. तो जो भी मैं सेगमेंट बना रही हूँ वो मेरे दूसरे सेगमेंट से डिफरेंट होना चाहिए. ओके नाउ अगेन इट हैज टू बी एक्शनेबल. एक्शनेबल का क्या मतलब होता है कि whatever strategies that you are making, whatever things that you are deciding, उस पे आप वर्क कर सकते हो. अगेन इट इज समथिंग नॉट विच इज जस्ट करने के लिए आप कर रहे हो. It needs to be action oriented also. So these are certain characteristics of a good market segment. Now these market segments, again we have to only talk about the consumer segments, not the business segments. तो अभी तक हमने पढ़ा कि segment क्या होता है, what are the levels of segmentation when we talk of a market. ठीक है. Now next comes what are the major segmentation variables. How is segmentation done? किस basis पे हम segmentation को करते हैं? So there are different variables or different basis of segmentation. So for example, geographic segmentation. So based on the geography, we can divide or segment the population. So can you give me certain examples? Can you give me certain examples of the same? Geography की basis पे products को segment करना है यार. Woolen clothes and high A altitude particular areas. region or a state. So give me that that I know, but can you give me examples of that? Like you said, in Kashmir, tea, a kind of any kind Ma'am, of like tea kind of Very good. plantations are there. Yes. Very good. और what बताओ are company specific. ma'am different clothes in different parts of the like country. Yes. और बताओ. Packaged foods. Ma'am, phones. Packaged foods कैसे होगा? लाइक मैम सेगमेंट वाइज अगर देखने जाए तो पैकेज फूड्स जैसे बाहर के कंट्री में ज़्यादा मार्केटेबल एक्टिविटीज वहाँ पे होता है, लेकिन हाँ अगर आप उस इंडिया फॉर्म में में देख रहे हो तो then it will be मैम under the जैसे geographic segment. जैसे मैम लेज ने अपने इंडियन मसाले करके वो अलग से वो करता है, और अमेरिकन क्रीम के लिए क्रीम बेस है. Yes, very good. is introducing their pizzas according to the region or geography. Yes,
वेरी गुड। और मैम गेम वाले जैसे चाइना में अलग से वो करके अपना डेवलपमेंट के लिए उनका बिल्कुल अलग रहता है, और बाकी वो देशों का प्रोडक्ट करता है। यस यस, सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। ये आपको समझ आ गया? Yes, किसी को sir. कोई डाउट है? Yes, ma'am. तो स्क्रीन पे No, ma'am. Yes, ma'am. okay, now talking about the next form of segmentation, the next form of segmentation is the demographic segmentation. So demographic segmentation में हम बात करते हैं कि on the basis of age, on the basis of the family size, on the basis of the occupation, on the basis of the family life, कि family का size कितना है, ठीक है? तो ये सारी चीजों के basis पे think about products and ads on the basis of age, on the basis of family size, on the basis of occupation, on the basis of family income. Decathlon for sports for youth. Yes, what else? मूवीज जो आर रेटेड, ए रेटेड अलग अलग होती है एज वाइज। लाइक मैम देखो, एक शैम्पूज के सैशेज भी बनते हैं और बॉटल्स में भी आती है पैकेजिंग अकॉर्डिंग टू द इनकम फैक्टर। ओके, ठीक है। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स। फिर आ जाती है आपकी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। सो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफस्टाइल, द इमोशनल इफेक्ट्स, द सोशल क्लास, ठीक है? एंड व्हाट इज द लाइफस्टाइल? बहुत फास्ट लाइफस्टाइल है, जैसे अभी हमने कन्वीनियंस फूड्स की भी बात की थी कि वो जोग्राफिकली भी हम कर सकते हैं, और कन्वीनियंस फूड्स की कौन से एरियाज में कौन सा सेट ऑफ कंज्यूमर हमारा ऐसा है जहाँ पे लाइफस्टाइल हमारी बहुत फास्ट मूविंग है और कहाँ पे नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल्सो वी कैन work on it. Okay, so examples बताओ on the basis of lifestyle, जो कि on the basis of your personality, on the basis of your values जो segmentation की जाती है. So can you think of examples pertaining to that? Aspirational bikes like Raymond Royal for Enfield. formal clothes. Yes, इसके अलावा लग्जरी क्लॉथिंग, Watches. Ma'am, luxury cars because luxuries. Yes, 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 luxury very cars. good. What else? Chocolates. Ma'am, स्टेकेशन। ठीक है, हाँ ठीक है। सो यस, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ दैट। उसके बाद लास्ट काइंड ऑफ वेरिएबल होता है हमारा सेगमेंटेशन का, बिहेवियरल सेगमेंटेशन। सो बिहेवियरल सेगमेंटेशन पे बहुत सारे सब फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं, लाइक what is the occasion for which a product is being bought, like अभी दिवाली सीजन है, फेस्टिवल सीजन है, like then what are the benefits sought out? But for example if I am buying a toothpaste, तो मेरे लिए वो बेनिफिट क्या दे रहा है टूथपेस्ट? क्या वो मेरी कैविटीज को ठीक कर रहा है? क्या वो मेरी डिके को ठीक कर रहा है? क्या कोई मेरी सेंसिटिविटी को ठीक कर रहा है? सो व्हाट इज द बेनिफिट दैट आई एम डिराइविंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट? देन कम्स योर यूजर स्टेटस, कि आप प्रेजेंट यूजर हो, ओल्ड यूजर हो ब्रांड के। देन द यूसेज रेट, आर यू अ फ्रीक्वेंट यूजर, आर यू अ नॉन फ्रीक्वेंट यूजर? तो जो फ्रीक्वेंट यूजर्स हैं उनके लिए बिग पैक्स, बंडल पैकेज बंडलिंग एंड ऑल दिस विल कम इनटू प्ले, और जो लोग फ्रीक्वेंटली यूज नहीं कर रहे उनके लिए स्मॉलर पैक्स। देन लॉयल्टी स्टेटस क्या है, व्हाट इज द एटीट्यूड? सो ऑल दिस वुड कम अंडर योर behavioral segmentation. Okay, तो this was about segmentation and targeting जो कि हमने पिछली क्लास में किया था. So I have given you a brief overview of that कि segmentation क्या है, कैसे हम segments बनाते हैं. It is just a brief overview. तो that is about that. Okay, so I am going to show you a small video which I want you to see because हमने offline class में काफी cases वगैरह discuss किए थे. तो जस्ट हैव अ लुक। जूडियो के बारे में सबने सुना है? yes, Are ma'am. you a Yes, working ma'am. woman who's Okay, fed up of yes, going to the so I'll office? show you a Would you like case to work study from of anywhere Zoodio. you like and do And then we'll international discuss remote it. work with Okay. high paying? Just a moment.
Are you able to see this YouTube screen? No, No, ma'am. no, No, ma'am. ma'am. No, No, ma'am. ma'am. अब दिख रही है? Still on PP. No, No, Do you ma'am. ma'am. know No, ma'am. Zudio, Still which is not. one No, of ma'am. India's most Please, popular fashion share the screen. Just a मैम आई moment. थिंक आपको पीपीटी हटानी पड़ेगी. I think it's freeze, brand? ma'am. I एक think बोल it's Does रहा not freeze. have a एक website where you No, can it's buy in its the clothes washroom. online. Just a moment. अभी दिख रहा है? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. And yet, Zudio has grown insanely as a brand in the last few years. Do you know Zudio, which is one of India's most popular fashion brands, does not have a website where you can buy its clothes online? And yet, Zudio has grown insanely as a brand in the last few years. Today, when almost all modern companies are trying to sell online in order to reach more people, Zudio is actually doing exactly the opposite. And they are still managing to defeat all of them. Take a look at the stock price of Trend, which is Zudio's parent company. It has grown 1200% in just the last 4 years. So the question is how? In a time when selling online is almost like a rule for every brand to grow today, how exactly did Zudio grow so crazily and that too by only running physical stores? Let's decode. But before we get started, a special thanks to Zerodha Zero One Network for supporting this channel. Now, to understand the success of Zudio, we will have to go back to 2016. This was the year Trend Limited, which, by the way, is part of the Tata Group, had launched Zudio. Now, the goal here was not to make it like any and every other fashion brand. Tata had a very, very clear purpose here. They wanted to cater to the aspirations and the preferences of India's youngest shoppers, which are Gen Zs. Now, you might ask me, why only Gen Zs? See, in many, many ways, Gen Z is currently the most tech savvy generation in our time. And if you yourself are a Gen Z or you have friends and family who are Gen Z, you would probably very well understand how this particular generation has been brought up in a world that is heavily influenced by the internet and by social media. Now, Gen Zs are influenced by social media and the internet so much that more than 45% of users on Instagram are Gen Z and more than 20% of users on YouTube are also Gen Z. And the reason why I'm stressing on these social media platforms so much over here is because they are super powerful tools for people to discover new trends, especially in a place like fashion. Now, see, earlier people would have to look through newspapers and magazines in order to find out what kind of fashion is in trend. But today, almost all of that has shifted to social media. Today, when people like you and I want to know what is trending in the world, we typically look for the answer on Instagram Reels or on YouTube videos, right? And considering Gen Z was practically born and brought up in the age of social media, all of this automatically becomes a lot more applicable to them than to any other age group. So, with all of this said, I'm sure at this point you might be wondering if Gen Z is so active and comfortable with the internet and social media, why the hell would a brand like Zudio, which almost entirely focuses on Gen Z, not even launch online? Let me tell you a very interesting fact that would answer this question for you. About 80% of India's Gen Z population lives in non metro tier 2 and tier 3 cities. Now, while these smaller cities might not have the glamour of bigger cities like Mumbai, Delhi, Bangalore, etc., the people who live there have almost equally big aspirations. Young people in tier 2 and tier 3 towns want to dress well, they want to stand out, and they also want to express themselves almost as well as tier 1 town people do. But the biggest problem today is that they do not have enough affordable and trendy options. And that is exactly where Zudio found a massive, massive gap. They realized that while Gen Z is tech savvy for sure, e-commerce in tier 2 and tier 3 cities is simply not as effective as it is in tier 1 cities today. And also on top of that, returns in e-commerce in India can go as high as 40%. So it is super hard for a fashion brand, especially one that caters to the masses, to make money meaningfully here. So therefore, Zudio decided to stick to the old school touch and feel approach by only opening physical stores and not focusing on selling online at all. Today, about 85% of Zudio stores are located in non-metro cities. And by the way, even in the case of metro cities, Zudio is very, very careful of where they open their stores. Look at this map of Zudio stores in Delhi. Do you notice how there is no Zudio store in the southern part of Delhi? Now take a look at this map of Zudio stores in Mumbai. Once again, there are no Zudio stores in the south part of Bombay.
Now, the reason for this is very, very simple. Both South Delhi and South Bombay are perceived to be posh areas. This means the richest of the rich who live in these two cities live in these particular areas. Now, I wanted to take a moment and imagine this scenario. You own a clothing brand and you have enough money to open up a store in the best locality of two of India's richest cities, Delhi and Mumbai. The question is, would you do that? Well, if I were you, I would definitely do that. But the thing is, Zudio, which by no means is short on cash, decided to not open up stores in these very localities. And if you look just a little deeper, the reason is actually very, very smart. See, Zudio's entire mission practically is to make fashion more affordable and accessible. Even though having a store in the most prime localities of a city is a matter of pride to some extent, it simply does not help Zudio if you think about it. Because if an entire locality is rich enough to not even care about buying clothes from a budget brand like Zudio, then Zudio is obviously better off not having a store there at all. And yes, I know this sounds stupidly obvious when you think about it right now, but if you pause for just one moment and think about this deeply, it honestly is not so obvious. And I'll even tell you why. Look, the problem with a lot of brands today is that they run behind all kinds of customers at once. Most of them do not have a clear understanding of who their target audience really is. As a result of that, they end up splurging a lot of money in the wrong direction and eventually end up disappointing themselves as well as their investors. So, if you are an entrepreneur or you are someone who wants to start their own brand in the future, Zudio is a perfect example of what can happen if you find one kind of customer profile and use all your time, effort, and energy in serving them rather than focusing on everybody. But this, let me tell you, is not the end of what we can learn from Zudio. See, just having the insight that Gen Zs do not have enough shopping options definitely gave Zudio a big head start. But it obviously was not enough to keep competition away, right? And Zudio also knew this could become a problem. That is why they started focusing on their next biggest superpower, which is pricing. Now, if you have ever been to a Zudio store, you will know that their products are priced insanely low. You will find t-shirts for as low as 200 rupees, shoes for as low as 500 rupees, jeans for as low as 700 rupees, and whatnot. Now, for a country like ours in India, where an average person between the age of 18 to 24 earns less than 6,000 rupees per month, this kind of pricing is a massive blessing. Because if you think about it, for Gen Z, affordability is not really a preference. It is actually a necessity because many of them are still in college or at best in the early years of their first job. And this very affordability factor, ladies and gentlemen, has become Zudio's biggest unique selling proposition today. Also, another very, very interesting aspect of Zudio is how it focuses on building its own brand. Look, unlike other retailers like Shopper Stop or Reliance Trends, which actually focus on aggregating and selling other brands, Zudio exclusively sells its own products. Now, one obvious advantage of this is that it keeps its costs low. But more importantly, this helps Zudio build a much more stronger and more distinct brand identity in front of practically everybody. And let me tell you that that particular brand loyalty is something that Gen Z as an age group values very, very deeply. So So, in a way, if you zoom out a little and think about it, Zudio's strategy is very, very simple. Control the entire value chain from design to retail and therefore deliver high quality products at insanely low prices. Now, while Zudio almost entirely focuses on Gen Z and budget conscious shoppers, there is one more brand by the same parent company which caters to a slightly more premium audience and in a very slightly different way as well. I'm talking about West Side, whose stores are spread across tier 2 cities where India's middle class and their aspirations are growing very, very rapidly. Today, while West Side has about 109 stores in metro and tier 1 cities, it has 121 stores in tier 2 cities. Now, a very interesting thing about these tier 2 cities is that while people here have huge ambitions, competition and availability is extremely, extremely low. So, for a brand like Westside, which has great access to resources and capital thanks to the Tata Group, it is a brilliant opportunity to serve this heavily, heavily underserved market. So, now if you take all of these information pieces together and zoom out a little bit, you will probably realize how Tata Group, through its entity called Trend, is trying to capture all kinds of shoppers in India through smart business and marketing practices. They are targeting young and budget conscious shoppers through Zudio and a little more premium shoppers through their brand called Westside.
Also, by the way, most of us today will not know this, but for many, many years in the past, fashion has been considered a big luxury in a country like India. It has almost always been perceived as something which only the rich and the wealthy could afford. But today, almost none of us can imagine a world like that. And a big part of credit should go to Tata's trend. They have really managed to make high quality fashion available and accessible to everybody, no matter where you live, how old you are, or how much money you earn. Well, that's about it for this video. If you enjoyed this case study on Zudio and maybe learned something new from it, please do hit that. So I hope all of you have seen this video. Yes, ma'am. So Yes, you could ma'am, yes. understand the importance of segmentation here, that how effectively Tata they segmented the Zudio for the Gen Z population, and उसके बाद एक और segmentation का variable use किया है, इसमें क्या किया है वो? एक तो Ma'am, age के basis पे की है, demography demographic तो age हो गई, उसके अलावा एक और किया है, Price. ma'am, middle Price. class, No price. middle price, class, okay, price, middle class हाँ, segment. वो भी तुम्हारा ma'am demography में आ geographical गया. ma'am Very good. Geographical किसने बोला? yeah ma'am Sarthak Very good. So why do you say geographic, Sarthak? ma'am because they are talking about ma'am because they are talking about they are not opening their stores in south part of any specific cities, and they are also targeting the rural part of the part instead of the metro cities and all. Yes, All very metro good. cities I Very can good. say. Yeah. Very good. Yes. So basically, you have got an idea about segmentation with the real life case. Yes, Yes, ma'am. right. Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब next topic पे move on करते हैं. We will be now moving. This was a basic review of the last offline class. अब हम next topic पे move करते हैं, which is positioning. तो अभी हमने क्या किया है? हमने segment किया है, target किया है. Now we are positioning and differentiating the market. Now again, how do we develop a communication and a positioning strategy? ठीक है, तो हम पहले positioning करते हैं और value positioning करते हैं. Now what is positioning per se? So I will take a brand's name and you have to think about the first thing that is coming to your mind while I speak about the brand. Maggie. Nestle. सब मैगी को सुनने के बाद सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? Instant Indian noodles. noodles. Yeah, 2 minutes. 2 minutes. Affordable. Yeah. Affordable noodles, ma'am. Affordable, instant, 2 minutes, Indian. तो ये ब्रांड के बारे में, मैगी के बारे में ये सुनते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये चीजें क्यों आई हैं? Was Ma'am, it because taught of to their you in your schools, marketing in your marketing बोलो. strategy, what they have actually, how they actually marketize that brand. Yes, so Ma'am, it I is think due basic. to बोलो. ma'am, I think I think due to the pricing they I thought. No, not due to the pricing, but it is due to the positioning strategy. Yeah, कि okay, okay. आपको ब्रांड के बारे में क्या communicate किया गया है through the ads, through the information by the company. मैम मार्केटिंग के कारण इनके वो नूडल्स को आजकल कॉमनली मैगी बुलाते हैं, मतलब कोई भी चीज मैगी ज्यादातर मैगी के इस नाम से जानते हैं, नूडल्स की वजह टियर 1. हाँ जी, हाँ, तो उसको मतलब it is used as a synonym, right? तो इतना वो पॉपुलर हो गया है मैगी, ठीक है? तो वो किस लिए हुआ है? क्योंकि उस तरह से उसकी क्या बोल रहे हो? Positioning की गई. पोजीशनिंग की गई है इस तरह. Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरह से उसकी मार्केटिंग इस तरह से की गई है, क्योंकि ये कोई हमें अपने ब्रांड्स के बारे में हम कोई स्कूल कॉलेज में थोड़ी पढ़ते हैं, बट ए परसेप्शन अबाउट द ब्रांड्स कम्स थ्रू द मार्केटिंग. की जो मार्केटियर है उसने हमारे माइंड में ब्रांड की क्या इमेज बनाई है, वो बेसिकली होती है पोजीशनिंग. अब वो इमेज हम कैसे बनाते हैं कि मैं एक ब्रांड को चूज करूंगी विज़ दैट ऑफ माय कॉम्पिटिटर. तो अगर मेरे को नूडल्स खाने हैं तो मैं मैगी के नूडल्स ही क्यों खाऊंगी एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स. तो वो एक हमारी पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है? तो एग्जांपल्स ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशंस. सो अगेन these are certain examples. So again this is not very readily available. Purdue chicken होता है, तो उसकी टारगेट कस्टमर्स क्या होते हैं? क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर्स ऑफ चिकन. बेनिफिट क्या है? टेंडरनेस,
price 10% premium. So what is the value proposition that it is offering? That it is more tender golden chicken at a moderate premium price. तो पोजिशनिंग ये चीज है कि हम ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं मेरे प्रोडक्ट, मेरी सर्विस में, मेरे ब्रांड में, जो कि मेरे कॉम्पिटिटर्स में नहीं है, और वो चीज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने टारगेट ऑडियंस को, अपने सेगमेंट को, जो कि हमने अभी तक डिफाइन किया है. ठीक है. Similarly with Volvo, which is a station wagon, so it is safety conscious and it is for the upscale families. इसके benefits क्या हैं? Durability and safety. Price is 20% premium. So it is the safest, most durable wagon in which your family can ride. Then Domino's Pizza, it is convenience minded, and it is basically for the pizza lovers. So what are the benefits? Basically delivery, good speed and quality. Again, pricing क्या है इसकी? 15% premium. So again, what is the value proposition? It is a good hot pizza, tasty pizza, which is being served to your door in 30 minutes at a moderate price. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट पोजिशनिंग के बारे में? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अभी जैसे हमने ये एग्जांपल्स पढ़े हैं, ऐसे 2 इंडियन एग्जांपल्स आप चूज करोगे, उनके टारगेट कस्टमर सोचोगे, उसके बेनिफिट्स सोचोगे, प्राइस एंड द वैल्यू प्रोपोजिशन दैट दे आर ऑफरिंग. ओके, अंडरस्टूड क्या करना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इट इज 349. वी विल डिस्कस दिस एट 4 बिफोर वी मूव हेड. ओके, Yes, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, यस मैम मेरा एक क्वेश्चन था. हाँ बोलिए. मैम मैम 2000 जो 23-24 था सिलेबस हमारा 2025-26 में भी वही रहेगा जो पहले से चलता आ रहा है? बच्चे, वी आर presently talking about the theory. अगर आपको conceptually कुछ प्रॉब्लम है तो आप वो पूछिए. ओके मैम. वेबसाइट पे आप सिलेबस देख लीजिए, जो है वही आएगा. एसएलएम्स में भी लिखा हुआ है वो सिलेबस. Ma'am, यस, what is the last step of market segmentation? I लास्ट skipped स्टेप ऑफ that मार्केट slide. सेगमेंटेशन कहाँ पे पूछ रहे हो? अभी जो आपको करना है वैल्यू प्रोपोजिशन है वो. Okay. ठीक है, आई विल शेयर द टेबल विथ यू. ये रहा वो टेबल.
Yes, students. So have you thought of two Indian brands? Yes, ma'am. Yes, Yes, कौन ma'am. बताएगा सबसे Yes, पहले? One by one, please. yes, ma'am. Can I, ma'am? Yes. Ma'am, my first brand is Zoho, which is indigenously developed by Indians only, and value proposition is that all the data are basically stored in the Indian servers. They doesn't store Yes, the very data good. of Indian server outside the outside India, and it is almost equivalent to the Microsoft suite, Microsoft Office. You can achieve everything in Zoho suite itself, which offers Yes. by which is offered by Microsoft. Even this Microsoft Team alternative is there in Zoho. And Okay. ma'am, Ma'am, second is but ma'am, and second but is it is map. not Please, one by having any one. value right now. Shh. Ma'am, नहीं in Please, and one by ऐसे one do it. ma'am, okay second Prince, is okay please, hello, ma'am. please, एक Second, मिनट. Prince, हाँ. निर्णय आप बोलो, हाँ. One by one you can take up. this one. Ma'am, and Hmm. second is Map My India, which is a map which is Hmm. indigenously developed by India only, and when its Yes. value proposition, it is more accurate than Google Maps. Basically, इसमें जो Yes. इंडिया की जो रिमोट रीजन है उसको भी प्रॉपरली मैप किया गया है एज कम्पेयर टू गूगल मैप्स. Yes. So Yes. Good. these two Very good. these two brands. Yes. Very Yes, ma'am. good. Prince, you were saying something? मैम वो भाई ने ये कहा था ना, क्या कहते हैं, जो ऐप पे सारा डाटा इंडिया में रहता है, पर ये तो शायद इंडियन गवर्नमेंट का वो रूल भी तो है, जो भी कंपनी है सारा डाटा इंडिया में रहना चाहिए और प्रोसेस भी इंडिया में ही होगा, गूगल वगैरह जितनी भी है सबका. एंड मैम वो काफी न्यू ब्रांड है तो अभी वैल्यू पोजिशनिंग उसका कुछ हुआ नहीं है. नहीं, वैल्यू प्रोपोजिशन तो चाहे न्यू ब्रांड हो चाहे कोई भी हो, वैल्यू प्रोपोजिशन तो ब्रांड का ऑलरेडी होता है कि किस मैम चीज पे लोगों वो का परसेप्शन डिफरेंशिएट बन कर रहा रहा है है. उसी में. हाँ हाँ हाँ. वो तो बस ठीक है. अपनी वो एक भावना है इंडिया का, इसलिए वो हो रहा है, थोड़ा मैम टैरिफ वगैरह अमूल, लग. मैम अमूल अमूल. ओके. यस यस. is high मैम quality and I think affordable daily product. Ma'am, Ola Uber. Okay, okay. Let मैम Shivangi Ma'am हिमालय speak. Uber, टाटा Zomato. नैनो का कोई Country बिजनेस Delight. Yes, yes. मैम जैगुआर L&T. Okay, what is their value proposition? Ma'am, L&T is a construction company in India and he is leading India and nobody is nearby him in the construction business. Second one is LIC. So if we thought about insurance, the first thing we came in our mind is LIC. So it has an own value. Another example is Asirvad Atta. If we talk about Atta, the first thing which came in our mind is Asirvad. And another example can be the Asian Paints. If we go for paints, we first go for Asian Paints also, and it is an Indian brand. Good, good, good. Next, Shivangi was saying. Similarly, Shivangi has Tata Tea can also be Yes, one ma'am. option. Yes, yes, yes. What is their value Ma'am, proposition, बच्चे? Fevikwik can Ma'am, also be an it is to deliver basically a rich and engaging tea experience to the rooted Indian heritage and societal awareness. So basically catering to tea drinkers who connect with traditional Indian values and seek that authentic experience of tea. Yes, very good, very good. Ma'am, Next, Fevikwik also. Fevikwik. LED bulbs. Can you Fab specify India a can company's be the name for one that? because it's ruled the entire upper class and middle urban area also. Can you repeat the company's name, Anjali? Fab India, ma'am. It's a Fab India. clothing Okay, or okay. India. They targeting the lower class also. Sorry, upper class. Ma'am, may I Okay. speak? Yes. Ma'am, JCB Ma'am, the can be brand an is Big example. Bazaar, and the target customers are families and individuals looking to save money on daily necessities. And the price benefits are like low price and the best value and best quality of products with minimal cost. And the tagline itself defines it like इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं. And the value proportion is even shop for affordable products, making good quality accessible to masses and providing financial benefits. And the Okay, but second you one know, is अभी हाँ,
Big Bazaar abhi it is not anymore there in the market. You know Yes, that? ma'am. Yes. Right, ठीक है, right. ठीक. I know. हम्म. Ma'am, Bisleri can be an example. हाँ, बिस्लेरी की वैल्यू प्रोपोजिशन बताओ. Ma'am, Dettol antiseptic liquid Good. Ma'am, provides Lenskart. protection and safety for the family through its germs killing properties. Yes, yes, Dettol is an yes. Indian brand. Yes. मैम Like प्रोटेक्शन तो हर Patanjali एक Dettol. delivers affordable, natural, and Ayurvedic wellness products rooted in India tradition, made in India, and customer trusted for purity, health benefits, and being made in India. Again, when we were talking about Fab India is also not an Indian brand, although it seems, but the CEO of Fab India, he is not an Indian. Similarly with Dettol also, okay? Ma'am, it's Patanjali. हाँ, you were talking about Patanjali. मैं पहले के बता रही हूँ जो पहले discussions Okay, हुए. ma'am. Ma'am, Lenskart is also another Ma'am, example. Lenskart value proposition. Yes. Ma'am, Vishal Mega So, ma'am, Mart. it guarantees pure and safe drinking water, I guess, which has made it accessible and convenient to the Indian. Yes. A lot of wellness Ma'am, brands Vishal are there. For example, Mamaearth, Sugar Cosmetics, Bliss Hmm. Club. So these are targeting youth audience, basically, demographic between 18 to 25. So Yes. these are there in wellness. Also, Bella Vita is also there in wellness. Ma'am, in medical Yeah, so sector, the basically, Wellness Forever is one of the biggest brand. right. So basically, these you have gotten now an idea of what is positioning and what is value proposition. I hope this is clear to everyone, and you have discussed Yes, very ma'am. good examples of Yes, ma'am. Indian Yes, brands. ma'am. Keep it up. Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. अब बात आती है कि how do we develop and communicate a positioning strategy. अभी तो हमने ये तो पढ़ लिया कि positioning है क्या, but how do we develop and communicate a positioning strategy. So one of the strategists and a marketing strategist, Mr. Rees and Trout, he suggested some ways to strengthen your brand position, develop your brand position, and at the same time communicate that brand position to the audience. So सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो हमारी करंट पोजीशन है, जहां पे कंपनी की करंट पोजीशन है, उसको और स्ट्रॉन्ग करो. सो फॉर एग्जांपल द करंट पोजीशन ऑफ Domino's is a good hot pizza, 30 minutes of delivery, moderate price. तो इसी पोजीशन जो ये मेरी ब्रांड पोजीशनिंग है, मैं इसी को स्ट्रॉन्ग करती रहूं, इसी पे और वर्क करती रहूं. एक तरीका तो ये होता है. नेक्स्ट मेथड इज grab an unoccupied position. So what is grabbing an unoccupied position means? Can anyone tell? Grab an unoccupied position. Ma'am, Ma'am, vacant basically space in that the market. ma'am, the sector which is basically is untouched. Untouched. So Untouched, yeah. untouched. That's that where to launch the product. Yes. Unique. Unique. For example, ma'am. For example, अभी जो डोमिनोज की पोजीशनिंग है वो है कि 30 मिनट्स में आपको दे रहा है मॉडरेटली प्राइस्ड गुड पिज्जा. बट एक अनऑक्यूपाइड पोजीशन डोमिनोज के पास क्या हो सकती है कि वो बहुत ही कोई एग्जॉटिक पिज्जा में आ जाए कि स्पेशली वुड फ्राइड पिज्जा विद प्रीमियम वेजिटेबल्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो दैट इज ऑक्यूपाइंग एन डोमिनोज ने एक चीज को नाम किया डिलीवरी, इट इज डिलीवरिंग ऑन ट्रेन. तो वो भी एक अनऑक्यूपाइड पोजीशन थी जिस पर उसने काम किया. Ma'am, in position, दोबारा when we बोलिए are talking about, ma'am, when we are talking about unoccupied position, are we talking about the services or are we talking about positioning a product in that way? Positioning a product. Right now we are talking about positioning a product, but definitely could be about services also. तो जो ब्रांड की करंट पोजीशनिंग है उससे हटके हम किसी और सेगमेंट पे या किसी और पोजीशनिंग पे मूव कर सकते हैं. ओके, दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से. Any other doubt till now? Okay.
now the next is deposition. Deposition is कि जो मेरी positioning है उसको मैं हटा ही दूं. अगर डोमिनोज बोल रहा है कि we are delivering the pizza in 30 minutes and there were a lot of complaints of drivers कि वो 30 minutes में बहुत उनको रैश ड्राइविंग करनी होती है, ये करनी होती है, तो डोमिनोज ने अपनी पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी से ये हटा दिया कि हमें 30 मिनट्स में पिज्जा डिलीवर करते हैं, वो हटा ही दिया. दैट इज डीपोजिशनिंग, राइट. देन रीपोजिशनिंग इज आफ्टर यू डीपोजिशन दोबारा से एक दूसरे पैरामीटर पे रीपोजिशन करो. So can you think of any company which has gone for repositioning? Can you think of any company जिसने repositioning की है? Ma'am, Tata. कैसे? Their nano, they actually obsolete that a specific brand of a specific car, I can say, and they repositioned within different, product line in that sense. Okay, yes. Again, Titan Maggie was is a very classical example हाँ of मैम, reposition. मैगी मैम, मैगी ने Yes. जैसे स्पेशल मसाला अलग से एक फ्लेवर इंट्रोड्यूस किया, और मैम जैसे पार्ले जी बिस्किट है उसने भी एक अलग फ्लेवर, एक पार्ले जी गोल्ड और एक चॉकलेट फ्लेवर पार्ले जी में इंट्रोड्यूस किया. नहीं, that is not repositioning. That is moving into an unoccupied position. Okay. Repositioning मैम is in the मैम case मैम कि हाँ मैम बोलिए. जैसे मैम फॉर एग्जांपल मैम महिंद्रा ने अभी मैम दे रिपोजिशन themselves टू ईवी सेगमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट, जस्ट टू गो ग्रीन. मतलब दे आर सेलिंग बट दे आर मतलब उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी ईवी की तरफ ज्यादा फोकस किया क्योंकि हाँ, तो गवर्नमेंट वो उसकी तरफ repositioning है. रिपोजिशनिंग होगी. हाँ, अगर हम बिल्कुल ही किसी नए सेगमेंट में मूव करते हैं वो है अनऑक्यूपाइड पोजीशन. बट मैगी के केस में क्या हुआ था, मैगी का बहुत ज्यादा वो आया था कि हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, लेड है, ये है, वो है, उसके मसाला प्रॉपर नहीं है. सो हाउ डिड दे रिपोजिशन? उस पहले कन्वीनियंस और फन टाइम को छोड़ के दे रिपोजिशनड इट एज समथिंग व्हिच इज हेल्दियर ऑप्शन विद एनरिच्ड विद विटामिन्स, ये सब. दैट इज रिपोजिशनिंग. डिफरेंस समझ आ गया? I'm Yes, like ma'am. Yes, आटा ma'am. नूडल्स मैगी ना. Yes, ma'am. हाँ, they मैम came up with टाइटन this वॉचेस kind भी of a आएगा क्या? product. क्या कह रहे हो? टाइटन वॉचेस उन्होंने अपना एक अलग सेगमेंट ओपन किया इन रागा फॉर फीमेल So वॉचेस. that is unoccupied. अगर आप अलग सेगमेंट ओपन करो जिसमें टारगेट ऑडियंस ही अलग है, पोजीशनिंग ही अलग है, दैट इज नो मैम, फाइंडिंग एन अर्लियर उनके अनऑक्युपाइड. पास विमेन वॉचेस थे, लाइक उन्होंने डेडिकेटेडली ऑन अ लग्जूरियस बेसिस पे अलग रागा के लिए ओपन किया है, तो वो किस में काउंट होगा? वो अनऑक्युपाइड होगा. एक नया सेगमेंट ही उन्होंने क्रिएट किया है. ओके ओके, ठीक है. यस गॉट इट. Yes, ma'am. So again, McDonald's can also be another example, Ma'am, ma'am, because they started off with how? just burger and fries, and when later on the concerns raised for nutrition, so they opened up for more salads and stuff like that, Yes, salads and yes, yes, vegetarian yes, Ma'am, options. yes. So that ma'am, is they again have a very good also example introduced of vegan meals. repositioning. Yes, Yes, ma'am. yes, yes. Yes. So very good example. Very nice. Very vegan meals they have ma'am, introduced. can I give one example? Yes. Ma'am, I would like to give an example of our own country, India. Like as PM Modi, like first we were doing Made in India, and then we did Make in India. So this can be as an example of our country, how we reposition ourselves as a country from Make in Very India good. to Made Very in good. India. Yes, yes, yes. समझ आ गया रिपोजिशनिंग का कॉन्सेप्ट सबको? एक सेकंड Yes, मैम, एक ma'am. सेकंड. Yes, ma'am. किसी और को कोई हेलो एग्जांपल देना है या कुछ समझना है? मैम, एक सेकंड, मेरे को ये पूछना है, अगर एक कंपनी ने मतलब वो डिपोजिशन किया है और दूसरे मार्केट में मतलब दूसरे तरह के बिजनेस में आ गया, तो वो आएगी रिपोजिशनिंग में? वो बच्चे रिपोजिशनिंग नहीं आएगी. वो होती है कि हम एक अनऑक्यूपाइड पोजीशन में जा रहे हैं अगर हम कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है. बट जैसे एक चीज पे जैसे जैसे बोलो. यूट्यूब पहले डेटिंग साइट थी, मतलब डेटिंग के लिए था वो. अब उन्होंने वो बंद यूट्यूब कब करके से फिर डेटिंग? वीडियो शेयरिंग, सोशल मीडिया. यूट्यूब सबसे पहले उनका फर्स्ट बिजनेस डेटिंग का ही था मैम, फिर अच्छा, इन्होंने ओके. वीडियो शेयरिंग में किया था. हाँ, तो दैट इज रिपोजिशनिंग. अगर आप एक हाँ ब्रांडिंग को कंप्लीटली चेंज करके उसको खत्म करके एक नए तरह से बोल रहे हो तो दैट इज रिपोजिशनिंग. बट हाँ एग्जिस्टिंग हाँ, अगर यही है पूछ रहा और था. फिर नए में मूव कर रहे हो तो वो अनऑक्यूपाइड पोजीशन है. हाँ जी, Ma'am, यही can I पूछ give रहा था. example? थैंक यस, यस, यस. बोलो. Ma'am, Jaguar cars.
अच्छा, किस Before repositioning का they example दे were रहे हो? facing too much of technical problems, so they pull back their products, and again they have relaunched their products. Yes, okay, good. ठीक है, तो बेसिकली आइडिया हो गया सबको व्हाट इज रिपोजिशनिंग? Yes, ma'am. Yes, ठीक Yes, है, ma'am. आगे बढ़े. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now again, what are the rules for success? Become the best, achieve a adequate performance level, keep improving, becoming more adequate. So this is how we have to have a गुड प्रोपोजिशन स्ट्रैटेजी. नाउ जब हम बात कर रहे हैं पोजिशनिंग की, तो हमें बताना है एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन. हमने वैल्यू प्रोपोजिशन बताई, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ब्रांड व्हाई इट इज बेटर देन द अदर ब्रांड्स. Because Domino's says कि my brand is better because I am giving a value for money pizza in just 30 minutes. So that is the unique selling proposition of Domino's. ठीक है, that is the value proposition. ठीक है, so first we have to decide that how many ideas, how many value propositions we have to give. ठीक है, एक बतानी है, दो बतानी है या तीन बतानी है. तो this is one of the most critical areas and one of the most important areas, क्योंकि इसमें क्या होता है, there are 4 positioning errors that can happen. Now what are those errors? First is under positioning. आपने अपनी value proposition create करते करते आप बता ही नहीं पाए कि आप क्या करना चाह रहे हो. व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर? दैट इज अंडर पोजिशनिंग. ओवर पोजिशनिंग इज आपने बहुत सारी चीजें बता दी, मेरे ब्रांड के पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. सो दैट इज यू आर पोजिशनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ पर्टिकुलर value proposition or a brand proposition. Third category is confused positioning. What is confused positioning? That brand itself is not able to communicate directly to the customers कि वो चाह क्या रहे हैं. ठीक है, वो खुद ही कंफ्यूज है. क्या हम वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं? आर वी गिविंग अ गुड प्रोडक्ट? आर वी गिविंग द डिलीवरीज in 30 minutes? So what is that? And sometimes the positioning is done such that it seems very doubtful. ठीक है, कंफ्यूज्ड है, डाउटफुल है कि ये जो चीज है भी, ये जो पोजिशनिंग कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं है. So these are the errors that can happen while we are positioning any product or service. And so we have to be very careful while we are developing our unique selling proposition. Otherwise we are liable to what do I say? We are liable to commit these positioning mistakes or these positioning errors. Okay. Now, can you think of brands जिनके साथ ये errors हो गए हैं या वो कर Yes. चुके हैं? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Nokia, ma'am, is a very good example. मैम जब एंड्रॉयड जब For what? मार्केट में आया, मैम जब एंड्रॉयड मार्केट में आया था तो नोकिया प्रॉपरली अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाया था कि हम लोग एंड्रॉयड सेगमेंट में जाएंगे कि वापस से कीपैड वाले में रहेंगे. तो दैट्स व्हाट दे, उन्होंने ऐसा फीचर निकाला जो बहुत ही मतलब टारगेट ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से कंपनी बंद हो गई. तो उसमें Very good. So ये पोजीशनिंग की किस में आएगा ये? मैम आई थिंक इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड एंड डाउटफुल पोजीशनिंग पे, दोनों के बीच में मैम. Okay, very good. Ma'am, Any other Paytm. example? Ma'am, Paytm Paytm. कैसे? Ma'am, they were giving cashbacks and they were focusing on their app also. And in this case, the PhonePe came and the Google Pay, and they were just giving services only, no cashback and all. And they have gained their market by simplifying Very their good. app. Okay. Can you give me some more examples? In last में थे सारे. Byju's. Byju's. Okay. कौन सी कैटेगरी में? Over positioning, ma'am. Over positioning. ठीक है. Okay. Okay. So let me give you some examples of these जो हम एकदम से बोलते हैं. So under positioning हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, customers they have very weak or unclear idea of what the brand stands for. ठीक है, तो टाटा नैनो जब इंडिया में आई थी, so it was marketed as what? It was marketed as the world's cheapest car. Cheapest car. But but उन्होंने ये हाईलाइट नहीं किया उसके बेनिफिट, सेफ्टी, डिजाइंस. सो कंज्यूमर्स दे वर वेरी अनश्योर. इट वाज स्लाइटली अंडर पोजिशनड कि ये रिलायबल है, स्टाइलिश है, एस्पिरेशनल है.
सो इट वॉज वेग पोजिशनिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ओवर पोजिशनिंग, इट इज टू नैरो इमेज। सो कस्टमर्स इस केस में क्या सोचते हैं, दैट इट इज ओनली फॉर अ वेरी स्पेसिफिक सेगमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल Lamborghini is seen as a very super luxury car. So a middle class, he doesn't even consider it for buying it, अगर वो एक थोड़ा स्लाइटर चीपर वर्जन भी उसको लॉन्च कर दे। सो दैट इज कॉल्ड एज ओवर पोजिशनिंग, कुछ ज्यादा ही उसे प्रीमियम बना देना या कुछ ऐसा दिखाना कि जो थोड़े लोअर सेगमेंट्स होते हैं कि उनको लगता ही नहीं कि हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर कंफ्यूज्ड पोजिशनिंग, सो कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजिंग अबाउट द ब्रांड आइडेंटिटी। सो एक टाइम पे कॉलगेट, इट लॉन्च्ड कॉलगेट किचन ऑन ट्रीज विच इज द फ्रोजन फूड। सो इट वॉज टोटली इनकंसिस्टेंट विद द टूथपेस्ट ब्रांडिंग कि भैया टूथपेस्ट कैसे फ्रोजन फूड में जा रहा है। सो दैट वॉज कंफ्यूज पोजिशनिंग एंड द कंज्यूमर्स वर टोटली confused. Again LG ने एक पॉइंट पे कहा पोजिशनिंग की अफोर्डेबल एंड प्रीमियम इनोवेशन ब्रांड। सो अगेन प्रीमियम भी है और अफोर्डेबल भी है, तो सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड कंज्यूमर परसेप्शंस आए एंड इट वाज अगेन अ कंफ्यूज्ड पोजिशनिंग। देन डाउटफुल पोजिशनिंग, पेप्सी का क्लेम कि इट इज वन ऑफ द हेल्दियर कोलास। सो पीपल वर कंफ्यूज्ड कि भाई इतनी ज्यादा शुगर और इतने सारे हेल्थ रिस्क वाली ड्रिंक, हाउ कैन इट बी हेल्दियर। एंड अगेन सम बजट स्मार्टफोन ब्रांड्स से कि दे हैव द सेम परफॉर्मेंस ऑफ आईफोन। अगेन क्रेडिबिलिटी डाउट हो जाती है इन सब चीजों से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट As like कंफ्यूज। Fair and Lovely, which is now Glow and Lovely, can be the Yes, doubtful ma'am. positioning example. Why? See, because they first claim ki it's a skin glowing cream, right? As a name, Fair and Lovely, but after some claim, कुछ उनके ऊपर केस वगैरह कुछ फाइलें हुई थी, उसके बाद उन्होंने अपनी नेम Yes, चेंज ma'am. कर दिया। तो ये आप बोलो कंफ्यूज पोजिशनिंग, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि कंफ्यूज पोजिशनिंग क्यों है ये। बिकॉज उन्होंने गलत क्लेम किया था, तो बाद में कंज्यूमर्स उन पे ऊपर डाउट, आई थिंक कंज्यूमर्स का डाउट रहा इस वजह से। ये तो फॉल्स मार्केटिंग में आएगा ना शायद। हाँ, ये दिस इज अनदर कंसर्न ऑल टुगेदर, इट इज मोर ऑफ एथिकल मार्केटिंग एंड एथिकल Yes, ma'am. एडवर्टाइजिंग, Yes, ma'am. ठीक है। ओके मैम। चलो आगे चलते हैं। हम रेड बुल। Yes, ma'am. रेड बुल का भी इसमें आ सेम वो केस भी जाइए था मैम। फॉल्स मार्केटिंग का है भाई, फॉल्स फॉल्स मार्केटिंग में ही आएगा मार्केटिंग का मैम। है वो। फॉल्स मार्केटिंग, हाँ वो अलग उस पे कंसर्न भी था केस उससे। हुआ था। फॉल्स मार्केटिंग नहीं थी यार, उसके अंदर डबल आई था। अरे वो बाद में किया है, इट गिव्स यू विंग्स करके थी टैगलाइन उनकी, तो वो मार्केटिंग ही थी ना उनकी। तो अभी भी तो पोजीशनिंग का एक एग्जांपल तो बन सकता है ना कि भाई कई लोग तो अभी भी ये सोचते हैं कि विंग्स देते हैं वो सच में। नहीं, अब उनकी स्पेलिंग देखना भाई, 3 4 आई लगा दिए। स्पेलिंग से नहीं यार, प्रोनाउंसिएशन डाउटफुल तो अभी भी है ना। स्पेलिंग तो कई लोग ऐसे हैं जो स्पेलिंग पढ़ी भी नहीं पाते उसकी। भाई वो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे पोजीशनिंग पढ़ रहे हैं हम। चलो इसको थोड़ा सा रीड करके आके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ अगेन कौन से फीचर्स पे हम पोजिशनिंग कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं हमारे प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट, फीचर कोई बहुत अच्छा है जैसे एप्पल करता है, या बेनिफिट जो प्रोडक्ट दे रहा है उसको हम कर सकते हैं पोजिशनिंग, या यूज और एप्लीकेशन पोजिशनिंग, इसका यूज क्या है, क्या हमारा यूजर बेस है। कॉम्पिटिटर पोजिशनिंग कर सकते हैं, जैसे कई बार पेप्सी और कोका कोला करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी पोजीशनिंग की, एक पर्टिकुलर कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी में इसको पोजीशन किया है, या हम प्राइसेस के बेसिस पे कि क्या कहते हैं इसको, मीडियम प्राइस है, हाईली प्राइस है, इन सब चीजों के बेसिस पे हम पोजीशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके मैम। यस ठीक है। मैम, सो क्लियर। Yes, ma'am. सो दिस वाज अबाउट पोजीशनिंग। एक छोटा सा वीडियो, स्टारबक्स सबको पता है क्या है? Yes, ma'am. स्टारबक्स की Yes, ma'am. पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी क्या है?
मैम चलो उस प्रीमियम वीडियो को देखते हैं फिर डिस्कस करेंगे चलो Renowned for ओके their distinctive brand, unique coffee blends, and iconic shops. But have you ever questioned how Starbucks developed into such a popular brand? It all began in 1971 when Jerry Baldwin, Zed Seiji, and Gordon Boker, three coffee lovers, launched the first Starbucks store in Seattle's Pike Place Market. At the time, Starbucks was a tiny coffee bean roasting business that solely offered coffee beans and coffee brewing supplies. However, Starbucks underwent a change in the 1980s under the direction of Howard Schultz, who joined the firm as CEO in 1982. Having been inspired by the coffee houses he had visited while traveling in Italy, Schultz had a dream to establish a coffee culture in the country. As he said in an interview, we wanted to create a place where people could come together, enjoy high-quality coffee, and connect with one another. Schultz introduced a new concept of selling freshly brewed coffee, along with the beans and coffee making equipment. Starbucks was able to stand out in the competitive coffee industry thanks to its emphasis on quality, experience, and sustainability. They also focused on creating a differentiated brand positioning by sourcing ethically and sustainably grown coffee beans, which resonated with socially conscious consumers. Starbucks followed an aggressive retail growth plan, opening outlets in high-traffic areas and growing overseas. They became a global brand with a significant presence in more than 80 countries as a result of their customization of their services to local taste and cultural quirks. Another important component of Starbucks' success has been innovation. To adapt to shifting consumer preferences and trends, they consistently improve their product offerings by introducing seasonal specials, tailored options, and increasing their culinary menu. Starbucks has been a leader in utilizing technology to improve consumer experiences and optimize business processes. They developed a loyalty program app, offered mobile ordering and payment options, and made investments in digital efforts to improve operational efficiency. Sustainability and corporate social responsibility are also important topics at Starbucks. They have launched initiatives to lessen their environmental impact as well as programs like the CIF.E that practice to ensure the ethical procurement of coffee beans. But perhaps the key to their success is the company's emphasis on fostering client loyalty. Starbucks promotes long-term relationships with its consumers and builds a devoted and loyal client base through its Starbucks Rewards loyalty program and personalized customer involvement. In conclusion, a combination of factors such as their exceptional brand positioning, aggressively expanding stores and locations strategy, product innovation, technology progress, and strong customer relationship management can contribute to Starbucks' success. Thank you for watching this video. So Indriyo, Yes, ma'am. यस मैम इसमें क्या पोजीशनिंग है स्टारबक्स की मैम पहला तो मैम हाई क्वालिटी कॉफी एंड दूसरा मैम कि दे प्रोवाइडेड अ कॉफी कल्चर वेयर पीपल कैन सिट टुगेदर एंड एंजॉय द कॉफी together. So that's what the culture and the coffee are two brand positioning of the Starbucks. The cafe, मैम कैफे कल्चर बेसिकली स्टारबक्स ने ही स्टार्ट किया था, मुझे इतना आइडिया है. यस मैम. मैम इन्होंने मैम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी थी 1971 में इनके 3 कॉफी लवर्स थे और 1980s में इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी थी पोजीशन चेंज करी थी यानी Ma'am, it's a third home between home and office. Like they provide space more than coffee for sitting. yes yes Yeah, they had ठीक है established themselves as a third place, basically. Okay, so yeah, so that was about it. So just a brief review of what we did in the today's class. We talked about recap. We had a recap about the segmentation. What is segmentation? What are the levels of market? How do we go about doing the segmentation? What are the processes? And we saw some videos and we talked about what is positioning, value proposition. How do we go about doing positioning? What are the errors in positioning? And what are the ways through which positioning can be done? Any doubt anyone has till now? Ma'am, I have a small doubt. You gave an Yes. example of Lamborghini for over positioning, right?
So their target audience is the people who are into the richer section, I Yes, suppose. their target position, target audience are definitely the upper segment people, but Yes. उन्होंने इतना ज़्यादा इसको ऐसा show कर दिया कि ये it is only for the rich people or it is only for the people with higher income, कि if they move into a segment with a slightly lower version of Lamborghini, तो जो middle income segment है वो सोच ही नहीं पाएगा कि हम इसको खरीद सकते हैं. Are you getting the point? Yes, but again, टाटा ने खुद को ऐसा पोजीशन किया हुआ है in few of the markets, in few of the products जहाँ पर वो affordable branding या फिर clothing या फिर whatever the products they are offering, वो cheaper section में देते हैं. And Lamborghini already have targeted their audience as like upper class. So वो already वो position कर चुके हैं, वो over position नहीं कर रहे हैं, I suppose. नहीं, वो हम ये नहीं कह रहे कि वो ओवर पोजीशन अब कर रहे हैं. पोजीशनिंग उन्होंने इनिशियल की, बट जब वो पोजीशनिंग कर रहे थे, चाहे टाटा भी है, टाटा अगर बारी बारी यही करता रहेगा कि वी आर फॉर द मिडिल सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, तो अगर वो किसी हायर सेगमेंट के लिए करेगा तो प्रोबेबली पीपल वुड नॉट थिंक कि क्या वो इतना अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं. Okay, ठीक okay, है, got your point. Yeah, thank you. got it. Okay. मैम Yes. मैम अभी थोड़ी देर पहले रेड बुल के बारे में बात हुई थी, तो उसके अंदर जो वर्ड है विंग्स, पहले तो उसमें सिंगल आया था तो सभी लोगों को लगता था कि ये सच में विंग्स देते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर केस हुआ उसके बाद उन्होंने ट्रिपल आई कर दिया उसमें कि उसका मतलब पंख ना रहे लेकिन वो उसका वर्ड वही रहे. लेकिन अब अभी भी उनकी एड्स में विंग्स दिखाते हैं कि वो सच में विंग्स दे रहा है. और अगर हम किसी नॉर्मल इंसान को ये बोलें कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स, तो वो भी यही सोचेगा कि भाई उससे पीने से पंख ही मिलेंगे. तो उस मार्केट में पोजीशनिंग ही ये बना ली है उसने कि भाई रेड बुल गिव्स यू लिटरली विंग्स, लेकिन उसका मतलब टेक्निकल मीनिंग कुछ और निकलता है. तो उसमें आप व्हाट इज योर क्वेश्चन बच्चे? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने बोला था कि वो फॉल्स मार्केटिंग वो था. वो बेसिकली वो कौन सी मार्केटिंग था, तो बेसिकली इट इज क्योंकि सिंस इट अ केस हैपेंड सिमिलरली विद मैगी, तो क्या होता है कई बार ये कंसर्न्स हमारे कुछ कुछ एथिकल, कई बार आपके कॉम्पिटिटर्स कर देते, तो एथिकल मार्केटिंग में ये चले जाते हैं, राइट. बट उसके बाद कंपनीज यूजुअली हैव टू गो इन फॉर रीपोजिशनिंग. व्हेन द कंपनी कम्स बैक दे हैव टू डू इट, क्योंकि उनको तभी भी सर्वाइव तो करना है ना. So they come with either a change brand name, change product or something, जैसे मैगी ने किया. बट फिर आपको अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा रिपोजिशन करना पड़ेगा, बट दैट इज अगेन अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर द मार्केटर ऑल्सो, क्योंकि आपका एक ऑलरेडी एक परसेप्शन वैसा बना हुआ है. ठीक है, परपेचुएशन उसका बना हुआ है, लेकिन उसने सिर्फ अपनी टैगलाइन में ट्रिपल आई किया था. उसने बाकी प्रोडक्ट वही रखा, उसकी एडवर्टाइजमेंट्स भी वही रखी. एडवर्टाइजमेंट्स में अभी भी मतलब हाँ, जब वो क्योंकि नाम उनका जो लेते, इशू था दैट वाज मोर ऑन देयर ब्रांड नेम, ब्रांड इमेज, ब्रांड जो उनका लोगो था. ठीक है, मतलब अभी भी अगर कोई उनके ऊपर केस करना चाहे तो कर सकता है कि भाई उसमें एडवर्टाइजमेंट में तो तुम विंग्स दिखा रहे हो. नहीं डायरेक्टली आई डोंट थिंक कि कौन सी स्पेलिंग ही कैटेगरी अलग में हो आएगा. गया इट इज भाई, मोर वो ठीक है, स्पेलिंग ही तो अलग है ये मैम विंग्स. इट इज मोर ऑफ अगर केस करना है नहीं करना है, दिस कंसर्न्स. अब वो किस किस बेसिस पे कर सकते हैं, क्या वो पॉइंटर्स ढूंढते हैं, कई बार आपके कॉम्पिटिटर्स भी कर देते हैं. समटाइम्स इट इज नॉट रियलिटी ऑफ ऑल, तो वो दैट इज अनदर डोमेन ऑफ स्टडी, बट इसमें दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे समथिंग एल्स. ठीक है, ओके मैम. एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस? No, So I ma'am. think we are good enough. In the next class, we'll start with differentiation. And I think whatever chat it is there in these classes, these are not for your personal chit chats. Okay, these are just for the official information or sometimes the questions that are being asked. So we request you to refrain from doing any informal chit chats in these groups. Okay. ओके मैम. So thank you Absolutely, everyone. ma'am. Thank you for joining in. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so Thank you, much. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks, ma'am. Excuse me, ma'am.
Yes. Ma'am, as per our SOL material, till what chapter we have covered? Till third? We are on the third chapter. Yeah. Okay. Okay. मैम मैम एक हेलो क्वेश्चन था स्टडी मटेरियल के हाँ रिगार्डिंग। जी। स्टडी मटेरियल मैम एसओएल की तरफ से डिलीवरी होगा क्या मैम? आई थिंक बच्चे डिलीवर होता है, आपने जो ऑप्शन किया होगा वो आपको डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, ओके, उसका रिगार्डिंग डिटेल्स नोटिफिकेशन कैसे मिल सकता है मैम? वेबसाइट पे आता है बच्चे, आपको वेबसाइट आप रेगुलरली चेक कीजिए। ओके मैम मेरा एक क्वेरी था, जैसे आपने अभी बोला कि एक ग्रुप बना है, तो अगर उसमें मतलब एक्सेस कैसे मिलेगा उस ग्रुप का? कौन सा ग्रुप मिला है मेरे को? आई डोंट नो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द चैट्स व्हिच आर कमिंग ऑन दिस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। देयर आर नो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स। ओके ओके ओके। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Mm-hmm.